हेलो पिला माने तो प्रीवियस क्लास में देखिले तुम ऑप्टिक्स उपरे तो ऑप्टिक्स व्हाट इज ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन व्हिच स्टडी द नेचर प्रोडक्शन एंड प्रोपागेशन ऑफ लाइट तो ऑलरेडी तार ऊपर डिस्कशन करथली एंड व्हाट इज लाइट तो लाइट ऊपर भी कहथली the light is an electromagnetic wave, light is a form of energy, light is an agent which produces in us the sensation of sight. Already se jinsa ko discussion karthile. Next kichita terms that is related to light already कहथली, that is source, medium and your ray, beam pare tomaro pencil etc etc. So that are the terms that are connected with light. तो next आज तमर सब ब्रांचेस ऑफ ऑप्टिक्स से जिनसटा में देखमा तो देखो दैट इज ऑप्टिक्स तो ऑप्टिक्स इज द स्टडी ऑफ जे डेफिनेशन लिखा था लिखो कि ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन व्हिच वी स्टडी द नेचर प्रोडक्शन एंड प्रोपागेशन ऑफ लाइट तो नेचर प्रोडक्शन एंड प्रोपागेशन ऑफ लाइट. Again, optics is divided into two categories. So optics is mainly divided into two categories. First is your ray optics. So it is divided into two categories. Divided into two categories. First, तुम्हारा फर्स्ट सब ब्रांचेस है तुम्हारा कौन दैट इज रे ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स. ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड second सब ब्रांचेस दैट इज योर wave optics or physical optics. Wave optics or physical optics. So these are the main two sub branches of optics. तो फर्स्ट सब ब्रांचेस है तुम्हारा रे ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स. सेकंड सब ब्रांचेस है वेव ऑप्टिक्स एंड फिजिकल ऑप्टिक्स. प्ले दीटा सब ब्रांचेस यार कहीं गेला प्ले एक्चुअली तुम लाइट रो दुईटा नेचर अच्छी गोटे है वेव नेचर आ गोटे है पार्टिकल नेचर दैट इज कॉल्ड वेव पार्टिकल डुअलिटी. दैट इज वेव पार्टिकल डुअलिटी. वेव पार्टिकल डुअलिटी. तो लाइट रो बोथ नेचर अच्छी तो हमरो वेव नेचर भी अच्छी एंड पार्टिकल नेचर अच्छी. तो फर्स्ट जोटा में सब ब्रांचेस दैट इज रे ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स दैट इज ड्यू टू द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट. पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट. एंड सेकंड सब ब्रांचेस जोटा में कहूँ दैट इज वेव ऑप्टिक्स that is due to the wave nature of light. Light रो जोड़ा another nature that is wave nature. तो सही nature टा पे हमारा आउट ऑप्टिक्स आछे that is your wave optics. That is your wave nature of light. ओके तो फर्स्ट जिनस हम स्टडी करमा तुम्हार रे ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स. हम जोटा पढ़ुचे दैट इज रे ऑप्टिक्स इज ड्यू टू द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट. दैट इज इट डील्स with the particle nature of light. Particle nature of light. तो पहले लाइट रा जो नेचर दीटा नेचर कहली गोटे है वेव नेचर आ गोटे है पार्टिकल नेचर. दिस इज ड्यू टू द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट. आम जोटा पढ़ा तुम रे ऑप्टिक्स दैट इज ड्यू टू कौन पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट एंड इट बेस्ड on
rectilinear propagation of light and laws of reflection and refraction. That means आम जो पढ़ा तुम रे ऑप्टिक्स रे that is rectilinear propagation of light. Rectilinear propagation of light What do you mean by rectilinear propagation of light? Rectilinear propagation of light means light can travel only in a straight line path. So light can travel in a straight line path. So light can travel in a straight line path. That is a ray जोटा कम कहूँ. Light can travel in a straight line path. Straight line path. That is the rectilinear propagation of light. And second, that is laws of reflection and refraction. The laws of reflection and refraction. And here we study the formation of image produced by plane mirror, your spherical mirror, and also tomorrow lenses. Here we study the formation of images by plane mirror, spherical mirror, and lenses. Okay, so what do you mean by formation of image by plane mirror, spherical mirror and lenses? तो already तुम plane mirror माने कौन पिले जानछो, that is हम जोटा normal mirror use करछे, that is your plane mirror. सही केस रे हमर जो image formation होचे, that is केमिति formation होचे. And spherical mirror means तुम already पढ़छो, that is concave mirror or convex mirror. That means तुम ओडिया रे पढ़िथबो कि हमर उत्तल दर्पण अवतल दर्पण जोटा सही केस रे इमेज फॉर्मेशन टा केमति होचे मैं एठी देखिबा तमर कोन दैट इज यूजिंग तमर रे ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड आल्सो इन लेंसेस. तो लेंस गुडा करबी तमर जो इमेज फॉर्मेशन होचे सेरा केमति होचे मैं एठी कंप्लीटली पढिबा से जंसडा. एंड पहिले तमर सेकंड सब ब्रांचेस होचे दैट इज योर वेव ऑप्टिक्स और फिजिकल ऑप्टिक्स. तो सेकंड सब ब्रांचेस हला तमर वेव ऑप्टिक्स और फिजिकल ऑप्टिक्स. And this wave optics is deals with the wave nature of light. Light जो nature अच्छे आउट nature that is wave nature. Wave means तमर कौन तरंग जोड़ी. तो light रा से wave nature पे हमें आउट optics पढ़िबा that is your wave optics. तो it deals with the wave nature of light. तो लाइट रो वेव नेचर उपरे ये डील्स करछि. एंड it based on the phenomena like second point करके भी लिखि परबा हमें it based on the phenomena like interference, diffraction and polarization of light. First phenomena play में कौन पढ़िबा that is interference, diffraction, थर्ड जिन सला पहले तुम कौन पोलराइजेशन ऑफ लाइट. ओके, तो दैट इज स्टडी इन वेव ऑप्टिक्स और तुम्हारा
फिजिकल ऑप्टिक्स तो दी चार पे वन वन छोटे छोटे चैप्टर एटा गोटे गोटे छोटे छोटे चैप्टर तुम इंटरफेरेंस हो कि डिफ्रैक्शन हो कि तुम पोलराइजेशन हो से गोटे गोटे छोटे छोटे चैप्टर एंड प्रीवियस क्लास जो कही मो रिफ्लेक्शन हो कि तुम रिफ्रैक्शन हो दैट इज सब गोटे गोटे छोटे छोटे पार्ट तुम कौन ऑप्टिक्स से आम डिटेल्स आम स्टडी करवा तो देख वन बाय वन ओके तो प्ले स्टार्ट करवा आम जो जोटा सिलेबस लिखाई कि तुम जो बुक रे लिखाई तुम रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट इज एक्चुअली फर्स्ट सब ब्रांचेस ऑफ ऑप्टिक्स दैट इज योर रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सब्जेक्ट नेम और चैप्टर नेम जोटा चैप्टर नेम जोटा मेंशन अच्छी तुम रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट and optical instrument. When a ray of light travel from one medium to another medium, से केस रे मेनली तीन टा जिनस हुए तीन टा जिनस पॉसिबल हुए तो दैट इज वन बाय वन कहूँ देख तो बिहेवियर ऑफ लाइट तो बिहेवियर ऑफ लाइट behavior of light at the interface between two medium okay तो बोले ऑलरेडी मैं फास्ट लेक्चर तुम कहीदे कि व्हाट इज ए मीडियम तो पहले व्हाट इज ए मीडियम जे देखी जानते कि मीडियम इज ए सब्सटेंस थ्रू व्हिच लाइट कैन ट्रैवल और लाइट कैन प्रोपागेट और टेंड्स टू प्रोपागेट तो ऑब्वियसली देयर आर मोर देन वन मीडियम तो दैट इज फॉर एग्जांपल तुम एयर मीडियम वाटर मीडियम ग्लास मीडियम एंड तुम वॉल दैट इज ऑल्सो एंड एग्जांपल कही तुम कौन वुड कही कि तुम आयरन भी कही दैट आर वन एग्जांपल ऑफ कार कि आम मीडियम तो व्हाट विल हैपन इफ ए रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम तो सिंपली मन कर तुम कौन पे दुईटा मीडियम अच्छी तो फॉर एग्जांपल गोटे है तुम कौन एयर मीडियम दिस इज योर एयर मीडियम एंड अनदर मीडियम इज योर वाटर मीडियम लेट इट बी वाटर मीडियम तो व्हाट विल हैपन एट द इंटरफेस बिटवीन एयर मीडियम एंड वाटर मीडियम एयर मीडियम और वाटर मीडियम रो इंटरफेस दैट इज एट ए बाउंड्री से बाउंड्री पे कौन हुए से जिनसा आम ये स्टडी करवा तो दिस इज योर वाटर मीडियम दैट इज योर वाटर मीडियम when a ray of light traveling from one medium to another medium at the interface between two media there are three effects can be occur तो फर्स्ट जिनस तुम जो इंसिडेंट लाइट मन कर दिस इज पे कौन इंसिडेंट लाइट यहाँ तुम कौन इंसिडेंट लाइट दैट इज इन एयर मीडियम जदि एयर मीडियम में गोटे आम रे ऑफ लाइट को इंसिडेंस करचे दैट रे ऑफ लाइट को आम कौन कहबा दैट इज योर इंसिडेंट रे और इंसिडेंट लाइट जोटा कहचे तो एट दी इंटरफेस से इंटरफेस रे कौन हम ये जो आम जोटा पे इंसिडेंस करछे से लाइट टाको एट दिस पॉइंट एई पॉइंट रे से लाइट रो किछिटा पार्ट पे तुम कौन रिफ्लेक्ट कर जाए अगेन टू दी एयर मीडियम जो तुम किछिटा पार्ट से तुम कौन रिफ्लेक्ट कर जाउछि दैट पार्ट ऑफ द इंसिडेंट लाइट इट्स कॉल्ड योर रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस रे जोटा तुम रिफ्लेक्ट करछि सेम मीडियम को दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे तो फर्स्ट जिनस तुम कौन किछिटा पार्ट जोटा तुम कौन सेम मीडियम को रिफ्लेक्ट हो जाउछि दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो दैट पार्ट इज योर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड सेकंड थिंग जोटा सेकंड जिनस बोले कहब से जो इंसिडेंट लाइट रो
किछिटा पार्ट तुम कौन एयर मीडियम को कह ट्रांसमिट हो दैट मीन्स एठू किछिटा पार्ट तुम कौन एयर मीडियम को से सिंपली ट्रांसमिट हो एंड दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे एटा को हम कौन कहबा दैट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड जो रेटा जीव दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे तो दैट इज द अनदर प्रॉपर्टी ऑफ लाइट तो लाइट रो सेरा गोटे प्ले कोन रिफ्लेक्शन भी गोटे प्रॉपर्टी एंड रिफ्रैक्शन भी गोटे प्रॉपर्टीज और दैट इज ए फेनोमेना भी हम कहि परबा तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दैट इज ए फेनोमेना एंड दैट मीन्स एटी तुम जो प्ले देखुचो रिफ्रैक्टेड रे दैट इज रिफ्लेक्शन इज आल्सो ए प्ले कोन फेनोमेना ऑफ लाइट एंड आल्सो तुम जो रिफ्रैक्टेड रखुचे दैट इज also a कौन रिफ्रैक्शन इज also a कौन फेनोमेना ऑफ लाइट तो सेकंड है पे कौन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड थर्ड जिनस आउ जोटा पे गोटे आउ गोटे पॉइंट रहा दैट इज योर ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइट ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइट तो तुम जो लाइट इनसीडेंट है तार किछिटा रिमेनिंग पार्ट जोड़ा मन कर तार किछिटा पार्ट कौन रिफ्लेक्टेड है किछिटा पार्ट तार रिफ्रैक्टेड हो गला आउ जोटा पार्ट तार रिमेनिंग रह दैट इज ऑब्जर्व बाय तुम कौन सेकेंड मीडियम और तुम ये तुम सेकेंड मीडियम रकम कौन है दैट इज योर वाटर मीडियम तो आउ जो पार्ट तुम रिमेनिंग रह गला दैट इज ऑब्जर्व बाय द सेकेंड मीडियम एंड दैट इज कॉल्ड दैट phenomena is called absorption of light that is absorption of light so mainly when a ray of light incident from one medium to another medium following three effects can occur that is reflection of light second thing is your refraction of light and third thing is your absorption of light reflection means कौन reflection of light means कौन इंसिडेंट लाइट रो किछिटा पार्ट सेम मीडियम को कौन हो तुम रिफ्लेक्ट कर जीवो एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मींस कौन जोटा इंसिडेंट लाइट थिबो तार किछिटा पार्ट सेकंड मीडियम को तुम कौन हो ट्रांसमिट हो जीवो सिंपली दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड जोटा रिमेनिंग पार्ट रह गला दैट इज ऑब्जर्व बाय द वाटर मीडियम और सेकेंड मीडियम जोटा थिबो तार कौन से जोटा रिमेनिंग पार्ट रह गला ताको कौन करबो ऑब्जर्व करबो एंड दैट फेनोमेना इज कॉल्ड ऑब्जर्प्शन ऑफ लाइट तो दैट इज अकर एट द बाउंड्री ऑफ टू डिफरेंट मीडियम तो ऑब्वियसली एटी जोटा पिले मीडियम रहिबे दैट इज ऑफ कोर्स तमर डिफरेंट मीडियम हेबे ओके पहले एबे देखबा से जो तमर सिलेबस रे मेंशन थिबा कि देखिथिबो तुमर रिफ्लेक्शन बोली गोटे जो टर्म अच्छे से टर्मटा को हमें ए स्टार्ट करवा देख वन बाय वन तो ये टू एक्चुअली तुम कौन से यही सब जिन तुम बेसिक जिनस दैट इज द फंडामेंटाल जिनस आम जाना दरकार मिनिमम जिनस जाना दरकार सो दैट तुम किछिटा जानीज तुम कौन लाइट उपरे तो तापर ये जिनसा पढ़ला आम इजिली बुझीपर गोटे जिनस तो देख फास्ट जिनस तुम कौन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट reflection of light तो पहले देखो व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो पहले जो तार डेफिनेशन कहबा इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट पहले प्रॉपर्टी मीन्स कौन दैट इज गुण हो कि तुम धर्म हो जोटा तुम कह इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच light is come back to the same medium from which it is incident,
after striking by an reflecting surface, after striking by an reflecting surface. Reflecting surface. तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस मीन्स कौन जो सरफेसटा तुम कौन लाइट को रिफ्लेक्ट कर से सरफेसटा दैट मीन्स दैट इज ए स्मूथ सरफेस दैट इज ए पे कौन पॉलिश सरफेस तुम देखि जोटा प्लेन मिरर रे पछपट साइड तुम कोटेड हो दैट इज कौन रिफ्लेक्टिंग सरफेस. तो ऑब्वियसली कौन से मीडियम टू कि तुम कौन जो स्टील बार देखुच से कौन आम इमेजटा देखा दैट मीन्स कौन दैट इज पॉलिश सरफेस कि सो दैट आम कौन लाइट टाको से रिफ्लेक्ट कर पारे से सरफेसटा आम कौन लाइट टाको रिफ्लेक्ट कर पारछि. तो दैट इज कौन रिफ्लेक्टिंग सरफेस. तो रिफ्लेक्शन ऑब्जर्व करबा ऑब्वियसली तुम कौन से सरफेसटा रिफ्लेक्टिंग हवा दरकार ऑब्वियसली. तो दिस इज योर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो दिस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट obeys two law. It obeys two law. That is called तुम कौन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. तुम रिफ्लेक्शन ओबेज टू लॉ. टू लॉज. तो दैट इज तुम आ गोटे हेडिंग देखिए लिखिपार दैट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. देख अनदर हेडिंग देखिए लिखा में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. दैट मीन्स तुम पे कौन जोटा रिफ्लेक्शन आम पढ़े दैट ओबेज टू लॉ. रिफ्लेक्शन ओबेज टू लॉज. दैट मीन्स पिला मेरे जोटा टीकाग्रु फिगर जोटा करथली जो रिफ्लेक्टेड रे थिला तो से रिफ्लेक्टेड रे तुम मन इच्छा मूव करि परिबनी से मन इच्छा जाई परिबनी. तो इट हैव टू ओबे टू लॉज. तो हमर दैट इज कौन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. तो से जो रे टाकू हमको ओबे करबा पड़बो दीटा लॉ को से ओबे करबो दैट इज. तो फिर एठी तुमरो फर्स्ट लॉटा कौन दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो अगर मैं फिगरटा करबा चाहूँ तुम तो देख से फिगरटा केमती हम. तो लेट दिस इज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस. मन कर गोटे रिफ्लेक्टिंग सरफेस और मन कर तुम कौन प्लेन मिरर जस्ट लाइक तार बैक साइड टाक कौन कर दिस इज कोटेड है. ओके. तो गोटे प्लेन मिरर दैट मीन्स दिस इज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस. एटी जदि गोटे रे ऑफ लाइट को पे इंसिडेंस कली एंड ए लाइट टाक आम कौन कहबा दैट इज योर इंसिडेंट रे. जोटा तुम पे कौन इनिशियली तुम जोटा कौन स्ट्राइक कर तुम प्लेन मिरर रे से रे टाक आम कौन कहबा दैट इज योर इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे. ओके. तो यही पॉइंट टाक आम कौन कहबा दैट इज योर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. दिस पॉइंट देखि पारथबो प्ले दिस पॉइंट मन कर दिस इज योर ओ पॉइंट. तो दैट इज योर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. तुम लाइट टा जो पॉइंट रे इंसिडेंस है दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. तो पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस तुम कौन से जो प्लेन मिरर को हम गोटे नॉर्मल ड्रॉ कर परिबा दैट इज परपेंडिकुलर ड्रॉ कर परिबा एंड दिस इज द परपेंडिकुलर. तो या आम कौन कहबा नॉर्मल और परपेंडिकुलर. तुम ओ एन जोटा है तुम कौन दैट इज योर नॉर्मल और परपेंडिकुलर. एंड दैट इंसिडेंट रे तुम नॉर्मल संगे जो एंगल टा करिपो दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस. दैट इज द इंसिडेंट रे नॉर्मल संगे जो एंगल करिपो दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो दैट इज डिनोटेड बाय तुम कौन आई. That is denoted by I. This is called angle of incidence. Angle of incidence. Okay. And
ऑब्वियसली देयर जदि तुम कौन लाइट टा रिफ्लेक्ट होची देयर शुड बी ए कौन रिफ्लेक्टेड रे तो रिफ्लेक्टेड रे माने कर एटा ओके तो याको आम कौन कहबा जोटा तुम कौन स्ट्राइक कला पर जो रेटा सेम मीडियम को ट्रांसमिट हम से रेटा को आम कौन कहबा दैट इज योर रिफ्लेक्टेड रे दैट रे इज योर रिफ्लेक्टेड रे एंड प्लस जो रिफ्लेक्टेड रे तुम्हारा नॉर्मल संगे जो एंगल करिबो दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो दैट एंगल इज कॉल्ड angle of reflection and that is denoted by r small r and angle of incidence को small I so this is your angle of reflection angle of reflection पहले मन रख से जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज तुम कौन नॉर्मल संगे जो एंगलटा नॉट कि तुम कौन प्लेन सरफेस तुम प्लेन मिरर संगे जो एंगलटा सेटा नुह दैट इज नॉर्मल संगे ऑलवेज एंगल ऑफ इंसिडेंस माने ऑलवेज तुम कौन इंसिडेंट लाइट रो नॉर्मल संगे एंगल एंड रिफ्रैक्टेड रे और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मींस रिफ्लेक्टेड रे रो नॉर्मल संगे एंगलटा ऑलवेज दैट इज ऑलवेज ओके तो योर फर्स्ट लो जोटा कहूचे दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दैट मींस आई इक्वल टू कौन आर जदि आईटा तुम 30 डिग्री आर मीन्स 30 डिग्री जदि एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है तुम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी तुम कौन रिफ्लेक्शन भी तुम कौन दैट इज 60 डिग्री हम मन कर एंगल ऑफ इंसिडेंस केते 45 है ऑब्वियसली एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी केते हम ऑब्वियसली तुम कौन 45 डिग्री दैट मीन्स तुम कौन फर्स्ट लॉ दैट इज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ एंगल ऑफ इंसिडेंस equal to angle of reflection that is पहले जब मैथमेटिकली लिखा that is angle of incidence I angle equal to R angle that is your first law and your second law कौन कहूँ पहले that is इंसिडेंट रे जोटा तुम कौन इनिशियली जोटा आछि मन या नेमिंग दे देबा माने कर दिस इज P दिस इज Q दैट मीन्स एठी तुम पहले इंसिडेंट रे कौन आमर PO टा तुम इंसिडेंट रे O पॉइंट हला तुम कौन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आउ OQ दैट इज योर रिफ्लेक्टेड रे तो एठी हमर कौन कहूची सेकंड तुम लॉ दैट इज incident ray reflected ray and the normal at the point of incidence normal pile means kono normal means tomra on ta hala tomra kon normal at the point of incidence o ta hala tomra point of incidence jo normal rahitbo that is your normal at the point of incidence that is your on so according to second law this PO OQ and ON lies in same plane एटा पहले तुम कौन गोटे प्लेन रे हेबे मन कर मुझे कहबी तुम इंसिडेंट रे ए टाइप मन कर इंसिडेंट रे दिस इज योर इंसिडेंट रे एटा हला तुम कौन नॉर्मल ए पॉइंट रे जदी गोटे कौन फॉर एग्जांपल दिस पेन दिस इज योर मन कर नॉर्मल आउ मुझे कहबी रिफ्लेक्टेड रेटा तुम कौन ए एंगल करबो दैट इज रॉन्ग एटा नॉट पॉसिबल बिकॉज तुम इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल तुम गोटे प्लेन रे से तीन टा तक गोटे प्लेन रे मन कर मुझे कहली जदि फॉर एग्जांपल PQ दिस इज PO तुम कौन इंसिडेंट रे एटा हला तुम कौन नॉर्मल एटा इंसिडेंट रे एटा नॉर्मल आ मुझे कहबी ए रिफ्लेक्टेड रे एमिति न रखी एमिति रहइबो दैट इज नॉट करेक्ट सेटा तुम कौन करेक्ट न दैट इज रॉन्ग बिकॉज से माने कौन प्ले गोटे प्लेन रे ऑलवेज रहइबो तो एठी हमर कौन ए जो तुमर व्हाइट बोर्ड ऊपर तीन टा तक रे तुमर रहिबे अदरवाइज दैट इज नॉट करेक्ट that is does not obey तुमर कौन laws of reflection that means that is not reflection तो reflection भी परिबन सेटा ओके तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ तुमर कौन that is the incident ray
reflected ray and the normal at the point of incidence. को point पे ले normal at the point of incidence, that is at O. Normal at the point of incidence. Point of incidence lies in same plane. Lies in same plane. And that plane is perpendicular to a reflecting surface. तो पहले एठी फिगर रे देखो, that is POON and OQ, that is lies in same plane. गोटे प्लेन रे ही रहिबे एंड एई प्लेनटा जोटा कहचे ए जो फॉर एग्जांपल दिस मोर हैंडा, तो एटा गोटे प्लेन जदि हला एटा तमर कोन रिफ्लेक्टिंग सरफेस. तो ए जो प्लेनटा हमर कोन PQON and OQ जोठी रहिबे सेही प्लेनटा एंड तमर कोन रिफ्लेक्टिंग सरफेस. दिस इज योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस. तार आउटर साइड तमर कोन कोटेड कर दबो. तो दिस प्लेन एंड दिस प्लेन परपेंडिकुलर टू ईच अदर. Which part is? So that is incident ray, reflected ray and the normal at the point of incidence lies in same plane and that plane is perpendicular to kaku reflecting surface. So this is your laws of reflection. तो every case रे तमर कोन ये प्ले जो laws of reflection अछि ए laws टा that is valid in case of plane mirror, in case of spherical mirror. Plus same law तमर कोन spherical mirror case रे भी that is valid. That means तमर कोन that is in case of concave mirror or convex mirror जोटा कहचो that is उत्तल दर्पण and अवतल दर्पण. सेही केस रे केमति हेबो? सेही केस रे हमरा कोन फॉर एग्जांपल गोटे spherical surface नियो, तो सेही spherical surface रो सेही तमर दीटा तक mirror पिले तमर कोन होइछि that is generate हेछि and तार गोटे छोटो पार्ट तार जदि आम छोटो पार्ट नवा दैट इज ए स्पेरिकल मिरर ठीक कहबा. तो सेटा हम आगो को पढ़िबा. तो सेही केस रे केमति करबा? से जो एटा हला गोटे स्फीयर, जो स्फीयर तयारी थिबो तार गोटे सेंटर ऑब्वियसली थिबो. तो माने करो मते एई पॉइंट रे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दरकार. को पॉइंट रे? एई माने करो दिस ओ पॉइंट रे. तो मु कोन करबी? ए ओ पॉइंट को ए सेंटर संगे जॉइन करबी. तो दिस विल बी द नॉर्मल. एटा जदि नॉर्मल हे गेला तो एटा जदि गोटे रे इंसिडेंस होची केमति like this, माने करो like this incidence होची तार माने करो इनर साइड टा कोटेड हेची. तो मैं आउटर साइड भी करि पारो नो प्रॉब्लम. तो तार माने करो कोन इनर साइड कोटेड हेची. तो दिस इज द कोटेज. तो माने करो तार इनर साइड जदी कोटेड हेची सेही केस रे तमर कोन जोटा रे आसीबो तमे कोन सेही साइड तमे ऑब्वियसली बाहर देखिबो. तो गोटे मिरर टा जदि पछपट तुम कौन कोटेड है ऑब्वियसली तुम फ्रंट देख. दैट मीन्स मोर रे ऑफ लाइट केमती इनसिडेंस हम ए टाइप. दैट मीन्स एठी मोर ओटा तुम कौन दैट इज द पॉइंट ऑफ इनसिडेंस. एटा तुम कौन इनसिडेंस रे. तो एठी गोटे नॉर्मल ड्रा करबी. जो पॉइंट रे हला तुम पॉइंट ऑफ इनसिडेंस एठी हमर कौन ओटा हला तुम कौन पॉइंट ऑफ इनसिडेंस. तो ओ पॉइंट रे गोटे नॉर्मल ड्रा करबी. ओ पॉइंट रे नॉर्मल केमती ड्रा करबी? सेटा जो तुम कौन स्फीयर रु तयारी हेतबो सेही स्फीयर रो सेंटर टा को तुम कौन कर से पॉइंट सहित सिंपली जॉइन कर दो. तो दैट इज द नॉर्मल. ए पॉइंट ताहले एटा हिजबो तुम कौन दैट इज द नॉर्मल. एंड नॉर्मल संगे इंसिडेंट रे जते एंगल करबो दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई. एंड तुमरो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ताहले कोटा हबो एठी जो जते तुमरो एंगल ऑफ इंसिडेंस अछि सेम एंगल रे तुम कौन करबो अगेन सेम मीडियम को गोटे रे ड्रा कर दबो. दिस इज जदि आई एटा हिजबो तुम कोन आर एटा हिजबो तुम कोन दैट इज द नॉर्मल. तो दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे. दिस इज योर इंसिडेंट रे, दैट इज इंसिडेंट रे. दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज योर नॉर्मल. दैट इज ओ एन मुना दिस दैट इज योर नॉर्मल. एठी भी तुम कोन इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर
रे भी तुम कौन से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तुम कौन ओबे हो ऑब्वियसली तुम कौन इंसिडेंट रे ON that is normal at the point of incidence and your reflected ray ए तीनटा तक तुम कौन गोटे प्लेन रे ही रहिबे एंड दैट प्लेन इज काहाकू परपेंडिकुलर रिफ्लेक्टिंग सरफेस एटा हिबो तुम कौन रिफ्लेक्टिंग सरफेस को ए प्लेनटा ऑब्वियसली कौन एठी भी परपेंडिकुलर हे जिवो तो ए जो तुम कौन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज वैलिड इन केस ऑफ प्लेन मिरर आल्सो इन केस ऑफ spherical mirror. Okay, this is all about.